Hi, this is Nikitan Dheer and you're watching me on FilmiBeat. मुझे लगता है कि जो मेरा किरदार शेरशाह में था जी वो उसको बहुत प्यार मिला। Yes. जब मुझे ये ऑफर हुआ तो आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि आई लैंड अप प्लेइंग अ लॉट ऑफ डार्क कैरेक्टर्स आल्सो। Yeah. So to get an opportunity to play something that is so clearly white, I think I'm lucky that way that opportunities are coming my way to do different things. For me, Rohit sir is not just a director. I consider him an elder brother. और जब भी मैं कोई नया काम करता हूँ कई बार होता है कि वो बहुत बिजी होते हैं, मैं मिल नहीं पाता, पर मैं उन्हें मैसेज जरूर करता हूँ कि सर मैं कर रहा हूँ, एंड ही ऑलवेज गिव्स मी ब्लेसिंग्स। समवन लाइक रोहित सर, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर वो मुझे 1000 लोगों का क्राउड भी होगा कहेंगे वहां जाके खड़े हो जाओ, फॉर मी दैट्स फाइन। आई मीन आई नो दिस समथिंग, you know, that I have that kind of faith on him. Raavan is not a black character, he's grey. जो रावण था, जो उसका हर इमोशन था was a very heightened emotion. Yeah. That was the stark difference between Raavan and Shri Ram. हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। मैं हूं मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ एक ऐसा एक्टर है जिनको कोई भी रोल दे दो वो कहते हैं ना कि ही इज लाइक अ वाटर, ही गोज इनटू दैट वेसल एंड वो रोल में हमेशा अच्छा कर जाता है, चाहे वो शरीफुद्दीन हो, तंगबली हो या रिसेंटली राणा या रावण का रोल। वेल आई एम श्योर इतना सब कुछ बोल चुका आप लोग समझ गए होंगे। टुडे आई हैव विद मी निकितन धीर। हाय निकितन, वेलकम टू Hi फिल्मी बीट। Murtaza, how are you doing? गुड, हाउ आर यू? Good, I'm good. सो निकितन, सबसे पहले तो मैं यही शुरुआत करना चाहता हूँ। इंडियन पुलिस फोर्स, मैं ना जब वेब सीरीज देख रहा था मैं एक ही चीज का वेट कर रहा था, अभी कोई ट्विस्ट आएगा और ये बंदा विलन निकलेगा। बट एक पॉजिटिव रोल किया है आपने, कैसा फील होता है? क्या थोड़ा शॉक भी मिल जाता है आपको कि यार रोहित सर है, उन्होंने पॉजिटिव रोल ऑफर कर दिया? मुझे लगता है कि जो मेरा किरदार शेरशाह में था जी। वो उसको बहुत प्यार मिला, यस। बिकॉज इट वाज अ रोल ऑफ अ हीरो। या। जो जसरोटिया जी थे, ही वाज कॉल्ड इंडियन रैम्बो, यस। क्योंकि हमारी एक फीचर फिल्म थी एंड इट वाज अबाउट द लाइफ ऑफ विक्रम बत्रा, सो वी कुडंट फोकस मच ऑन जसरोटिया एंड हिज स्टोरी, बट ब्यूटीफुल स्टोरी। तो जिन लोगों को उसके बारे में पता था या नॉर्मल ऑडियंस को, द कैरेक्टर वाज वेरी लव्ड। तो आई थिंक उसी चीज़ ने कहीं ना कहीं आई थिंक कॉन्फिडेंस दिया होगा मेकर्स को भी। एंड क्योंकि सिद्धार्थ वाज द लीडिंग मैन ऑफ द शो, या। आई थिंक समवेयर रोहित सर थॉट दैट मे बी आई कुड डू it. And I think he's the same man who's, like you said, is popularly made me Tangabali. It's been over a decade and people still remember it. तो जब मुझे ये ऑफर हुआ तो आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि आई लैंड अप प्लेइंग अ लॉट ऑफ डार्क कैरेक्टर्स आल्सो। या। तो टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले समथिंग दैट इज सो क्लियरली वाइट, or someone who's just there, and as the seasons progress maybe we delve into his story also. So it's a great I think change for me as an actor also, and to the audience also, that मैं कुछ अलग भी कर सकता हूँ। राइट। I'm not typically, जैसे आपने कहा आपको लगा कि ट्विस्ट होकर विलन हाँ, होगा ऐसा कुछ। आई एम So श्योर ऑडियंस ने भी ये सोचा होगा। तो I think I'm lucky that way that opportunities are coming my way to do different things. Right. You know, how has been this collaboration with Rohit? So I think, as you said, आप सूर्यवंशी में भी थे, and then of course you are now there in जी IPF. जी How has that been? I mean, is there a kind of कहते हैं ना कि ट्रस्ट कि ये फिल्म मेकर है, ये मुझे कुछ अच्छा ही देंगे? क्या अब वो एक ट्रस्ट आ गया है कि For with me, Rohit it will be like that? Rohit sir is not just a director. I consider him an elder brother. और जब भी मैं कोई नया काम करता हूँ कई बार होता है कि वो बहुत बिजी होते हैं, मैं मिल नहीं पाता, पर मैं उन्हें मैसेज जरूर करता हूँ कि सर मैं कर रहा हूँ, एंड ही ऑलवेज गिव्स मी ब्लेसिंग्स। मुझे याद है जब मैंने रावण भी साइन किया था, आफ्टर माय फैमिली वाज द फर्स्ट पर्सन आई मैसेज कि सर ऐसा ऐसा है और शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दिए मुझे। और जब हमने IPF का भी ट्रेलर लॉन्च किया, जी। तो he was one of the first people who saw my look as Raavan. So it was, it's always been that relationship with him. And yes, I think not only faith, I have blind faith with him. A man who presented me in the best possible way. Before Chennai Express, nobody presented me in that way. Yeah. Then people saw कि oh my god, he can be presented like this and his personality is such and such and such. बहुत फर्क पड़ता है. For an actor to have a good director means the world. Especially if you're playing a darker character and you're a villain, क्योंकि all your highlight moments, जब भी हीरो एंटर होता है, is usually high speed और सारा Yeah. टाइम मिलता है, बट विलियंस को उस किस्म का टाइम नहीं मिलता। रोहित सर's film or any project, everyone gets that time, which is very important because all characters are important to narrate a story. अगर आप हॉलीवुड देखेंगे जहाँ से ज़्यादातर लोग इंस्पायर होते हैं, विलेंस आर ऑलवेज फार 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 स्ट्रॉन्गर देन द हीरोज। हमारी इंडस्ट्री में भी जब तक जैसे प्राण साहब थे, जी। अमरीश पुरी साहब थे, तो विलेंस वो फैंटास्टिक विलेंस यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स। आप देखें त्रिदेव, देखें हाँ। त्रिमूर्ति देखें, उसमें विलेंस आर सिंगिंग सॉन्ग्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट
after a while they've become unidimensional. That's why villains have become boring to watch and to play. तो एंड विद समवन लाइक रोहित, सो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर वो मुझे 1,000 लोगों का क्राउड भी होगा कहेंगे वहाँ जाके खड़े हो जाओ, हाँ फॉर मी दैट्स फाइन. आई मीन आई नो दिस समथिंग, you know, that I have that kind of faith on him. So I feel I'm very lucky, and I hope कि भगवान ऐसा करें कि जब तक मैं इस इंडस्ट्री में हूँ रोहित सर एंड वी वर्क टुगेदर. राइट यू नो ऑफ कोर्स जैसे राणा एक जैसे आपने कहा बहुत वाइट कैरेक्टर है Yeah, टोटली एंड देन ऑफ कोर्स कट टू यू प्ले रावण व्हिच yeah, इज अ टोटली डार्क कैरेक्टर yeah. एक कहते हैं ना कट लाइक प्रॉपर लाइक यू नो एक ऐसा कैरेक्टर है जो लोग समझेंगे कि ये तो नेगेटिव ही होने वाला है नाउ व्हेन यू प्ले अ सच कैरेक्टर्स जो डार्क कैरेक्टर्स होते हैं हमने बहुत एक्टर्स से सुना है दैट यू नो दे से कि हम तो थोड़ा ये डिप्रेशन में चले गए वी हैड दिस थिंग वी कुडंट हम अपने आप को बंद कर देते थे रूम में व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशंस यू डू व्हेन यू प्ले सच डार्क कैरेक्टर्स See, you know, I think अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि रावण इज नॉट अ ब्लैक कैरेक्टर, इज ग्रे. एंड जो रावण था, जो उसका हर इमोशन था was a very heightened emotion. या That was the stark difference between Ravan and Shri Ram. श्री राम का जो भी इमोशन था, ही न्यू हाउ टू यू नो, बहुत सोच समझ के वो बात करते थे, परख समझ कर चीजें करते थे. रावण वाज राइट देयर. अगर गुस्सा आया तो इट इज एक्सप्लोजन, लव इज एन एक्सप्लोजन, एंगर इज एन एक्सप्लोजन, एनवी इज एन एक्सप्लोजन, एवरीथिंग इज एन एक्सप्लोजन. उनकी जो उस भक्ति थी महादेव के लिए, दैट वाज आल्सो लाइक नोबडी एल्स. आई मीन अगर आप पढ़ेंगे तो ही वाज समवन जो अपना 10 सर में से एक सर काट के, अपना एक हाथ काट के वीणा बना के यूज्ड टू सिंग फॉर महादेव. मतलब उस किस्म की भक्ति थी. So Ravan was not grey, was not black. He was grey. They reached a point where his ego took over and got the better of him, and that caused his entire downfall. Because उन्होंने इतना टाइम राज किया रावण ने, इसलिए आज भी रावण के जो मंत्र हैं, they are used in praise of Lord Shiv and all of that. So I think once you read and you understand the intricacy and the depth of the character, Yeah. he is something which is a privilege for any actor to play. Because you'll end up learning so much about your dharma, your sanskriti, your bharat, your gods, and basically human psyche. There is no emotion that Ravan lacks. Right. So for an actor it is an absolute privilege to be able to do this. So for me, though, when I was offered this, I felt extremely happy and privileged. And the way Siddharth Kumar Tiwari, who owns Swastik and who's visualized the show, उन्होंने जिस तरह से रावण को इमेजिन किया है, the way we presented it, I don't know if you've seen it, but it is very different from how people have seen. Yeah. These are all the stories जो आपने सुनी होगी, या जो लोग उन फैमिली से आते हैं, तो किसी ने पंडित जी ने एक कहानी सुनाई होगी, वो सारी कहानी हम इसमें बता रहे हैं. जब जो सबसे फेमस रामायण आई थी, जो अपना अरुण गोयल जी की थी, जो रामानंद सागर जी ने बनाई थी, जिसमें अरविंद त्रिवेदी जी रावण बने थे, वो बहुत यूनिडायमेंशनल कैरेक्टर था. और वो आया बहुत लेट था कहानी में. तो एक सर्टेन एज ऑफ रावण हैड पास्ट. वी आर कैचिंग एट अ मच अर्लियर टाइम एंड अ मच अर्लियर फेज ऑफ लाइफ. तो इट इज ब्यूटीफुल, इट इज सो मच टू डू एज एन एक्टर. तो डिप्रेशन वगैरह तो बहुत दूर दूर तक, आई डोंट इवन थिंक अबाउट सच थिंग्स. आई फील दैट इट इज, यू आर फॉर्चुनेट टू गेट टू प्ले सच कैरेक्टर्स, एंड you must enjoy them because they have so much depth and width in them. So I think all these things are just garbs. I feel people say all these things कि यार मुझसे सहानुभूति कर लो, you know, like me, love me. Everyone's in that thing. The minute you post something on Instagram or anywhere, you look how many likes, how many comments. Are you being loved enough, liked enough? So I really don't get into all that. For me, just getting a role like this is extremely a feeling of being privileged, and I really want to do it to the best of my ability. That's all I think about. Right. You know, of course, when it comes to this grand shows, Pankaj sir, of course, did Yes, Mahabharat. yes. When you sign such a grand show, which is, of course, you know, mythological, do you speak to him also that I'm going to play this character, how things are going to be? So, you know, my journey as an actor has been one of my own. जब मैं एक्टर बनने की मैंने ये सोचा कि मुझे एक्टर बनना है, तो मेरे फादर ने मुझसे ये कहा कि ना मैं कोई प्रोड्यूसर हूँ, ना मैं कोई बड़ा स्टार हूँ, मैं ज़्यादातर टेलीविज़न करता हूँ. आई कैन गाइड यू एज अ फेलो एक्टर एंड एज अ फादर, बट उसके अलावा तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है. द स्ट्रगल्स आर योर्स, द फेलियर्स आर योर्स, सक्सेस इज योर्स. तो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. Though I am with you, I mean, my father is my best friend and he's been a rock with me through my life. So we discuss things, but all my decisions have eventually been mine. Or as far as approaching the role also, I approach it in my own way, because somewhere my father and me are very different in the way we approach the roles. But inherently, because I'm his son, a lot of me is like him. Even my dialogue delivery somewhere is a little like him unknowingly. Yeah.
So yeah, I mean, I remember जब रावण का पहला episode telecast हुआ on the 2nd of Jan, he was so ecstatic. I was at work and he was trying to get in touch with me. There was no network, and he was just so proud of me that was a great victory for me, because somebody like him who has essayed a role of that magnitude, Yeah. जो इतनी beautifully लिखा गया था इतने साल बाद, आज he is happy with my work is a great thing. In fact, I tell my wife also, उन्होंने भी झांसी की रानी किया, तो I जी. said now I also have some bragging rights at home. और अभी तो रामायण की जर्नी बस शुरू हुई है. आई एम रियली होपिंग कि by the time it's done is something I will be really proud about. Right. You know, of course, कहीं ना कहीं there is this reports of Ramayan movie also being made, and रावण के कैरेक्टर यश जो KGF में उनको reports आ रहे हैं कि उनको sign किया गया. How do you think he's going to perform, because you're doing Raavan right now? Yeah, I honestly don't know. He was excellent in KGF. People who are investing that kind of money, उनका कुछ ना कुछ calculation होगा, कुछ ना कुछ mathematics होगा, जो I'm not that great at maths or economics. So to each his own. I mean, it's a story. हमारे पैदा होने के कितने साल पहले से Yeah. रामायण, हर साल रामलीला होती है, एक जगह नहीं होती, हजारों जगह होती है. So it's a story that can be said time and again, and whoever feels they can say it in a good way, they should say it, as long as your intent is correct, I feel.